Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the topic monosaccharides. So let's move to the whiteboard. So monosaccharides तो डियर स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर मोनोसैकेराइड्स के हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया था. सो वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स which are based upon the number of carbon atoms present in the monosaccharide. First of all, we have discussed the trioses. So, dear students, trioses कौन से sugars हैं? These are 3 carbon sugars, and these are the simplest of monosaccharides. Here, number 2, we discussed tetroses, which are 4 carbon sugars. Then we discussed pentoses, which are 5 carbon sugars or monosaccharides. Clear? And their general formulas as well: C3H6O3 and C4H8O4 and C5H10O5. Clear? Now, the fourth category is of hexoses. So, dear students, hexa means 6. So, these are the monosaccharides which has got 6 carbons in their structures. So, we are going to define the monosaccharides that contain six carbon atoms are called hexoses. And my dear students, remember one thing more, that pentoses and hexoses, they are the most common sugars. Clear? ये सबसे common sugars है. Means common means they are found mostly among the monosaccharides. And as far as the hexoses are concerned, biologically most important hexose is glucose. That is an MCQ. Most common are pentoses and hexoses, and biologically among the hexoses the most important is glucose. Clear? Now its formula is C6H12O6. तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप यही पढ़ते हैं कि ये जो सा फार्मूला है C6H12O6, this is the formula of glucose. So dear students, now listen very carefully. This is the general formula of hexoses, and its examples include
Its examples include glucose, fructose, galactose, and mannose. Clear? So these four hexoses have the same molecular formula. They are the isomers of each other. आपने ये टर्म पहले भी पढ़ी है, isomers. These are the chemical compounds having same molecular formula but different structure formula. Clear? तो molecular formula इन चारों का एक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आएगा? इनके स्ट्रक्चर्स में. क्लियर? इनके फंक्शनल ग्रुप में आ सकता है, इनमें पोजिशनिंग ऑफ OH एंड H जो ग्रुप्स हैं, जो एटम्स हैं, उन पे आ सकता है. सो दीज फोर आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. जैसे यहाँ पर मैंने बताया था राइबोस एंड राइबोलोस, यहाँ पर एरिथ्रोज इस तरह से एरिथ्रोलोस होती है. यहाँ पर आपने पढ़ा ट्रायोसिस में ग्लिसरल्डिहाइड एंड द डाइहाइड्रोक्सीस्टोन. सो ऑल ऑफ दीज आर द isomers of each other. Clear? Now I'm going to draw the structure of glucose. The open structure is it's a 6-carbon sugar. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The sixth one contains CH2OH, and the first one contains the aldehyde group. Now, what is present over here? OH and H. But at carbon number 3, the OH group is on left side and hydrogen on the right side, while all other carbons, they have OH on the right side. So this is the formula of D-glucose. Clear? इसी तरह से fructose. First of all, its numbering. This is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. और ये तमाम OH groups जो हैं 1, 2, 3, 4, they are on the right side. Just difference कहाँ पर आ रहा है? At carbon number 3. ये आपने याद रखना है. कार्बन नंबर 3 पे H और OH की जो पोजिशनिंग होती है वो ऑपोजिट होती है, मतलब कि रिवर्स होती है. So this is D-glucose. And don't worry, I am going to tell you what is meant by D-glucose. First of all, I am going to draw the structure of fructose. CH2OH. Then there is at carbon number 2 is the ketone group, CH and OH. But at carbon number 4, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे ये इन्वर्स होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 4 पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे और हाइड्रोजन राइट साइड पे. बाकी सब के अंदर उसी तरह से OH ग्रुप्स राइट साइड पे ही होंगे. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? So this is the open structure. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So over here there is some difference. तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 4 पर ये रिवर्स है. So this is the structure of fructose or D-fructose. Clear? तो अब आपको थोड़ा सा बताता चलूँ ये D-glucose क्या है या D-fructose क्या है, dear students. The D stands for dextrorotatory. Clear? It is for dextrorotatory. जब इस शुगर्स के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, राइबोस के अंदर या फ्रुक्टोज के अंदर या किसी भी शुगर के अंदर OH ग्रुप, ज़्यादा OH ग्रुप, दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड
then that one sugar is called as D-glucose. और अगर वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो, यानी ये इन्वर्स हो जाए, मिरर इमेज हो जाए एक दूसरे का, जिसमें OH ज़्यादा लेफ्ट पे हो जाए और सिर्फ एक आध जो वो राइट पे आ जाए, सो दैट इज टर्म्ड एज L-glucose, ये जिसको हम कहते हैं levorotatory. Clear? So D stands for dextrorotatory and another term is levorotatory. So it is L. तो D glucose आमतौर पर ये ज़्यादा कॉमन है as compared to the L glucose. Now dear students, the last type is haptosis. So as you can see, they contain 7 carbons. Clear? The monosaccharides containing 7 carbon atoms are called haptoses, and these are also very rare. They are found in the avocados or figs, etc. And they are also the intermediates in the biosynthesis of lipids. Clear? ये lipids की biosynthesis में भी इनका रोल होता है. So they are very, very rare monosaccharides. Now dear students, the ring structures. Which can ask me the short questions. So most of the monosaccharides or sugars form ring structures in solutions, most of them. Clear? जब भी इनको जब ये solution form में होते हैं तो ज़्यादातर जो होते हैं they form the rings. अब स्टूडेंट्स ये rings दो तरह के होते हैं. The rings are of two categories. Either they are 5-cornered or they are 6-cornered. The 5-cornered rings are called as furanose ring, while the 6-corner is called as pyranose ring. Clear? And here is its dummy. 5-cornered and the 6-cornered. और डियर स्टूडेंट्स, जैसी इनकी ड्रमी है आपने एज इट इज ही ड्रॉ करना होता है. दिखने में बिल्कुल ऐसी शेप लगनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फार्मूला तो सही लिख देते हैं लेकिन इनकी शक्ल बिगाड़ देते हैं. ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. सो देयर आर 2 शुगर्स विच फॉर्म 5-cornered स्ट्रक्चर. इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 1 इज ribofuranose and number 2 is fructofuranose ring. Clear? So first of all, the ribofuranose means के ribose जो है वो बनाती है ये 5-corner structure ring,
So this is a 5-corner ring. So over here is OH and H, then HH, अंदर वाले साइड पर ये यहाँ पर दोनों H हैं और बाहर इनके OH, क्लियर? और यहाँ पर H and CH2OH. So this is the structure of ribose. Carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. इसी तरह से fructofuranose, so this is the structure of fructofuranose. CH2OH and OH, 2, 3 and 4 and CH2OH. So this is the structure of fructofuranose. Now its rings number, carbon number. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is the structure of fructofuranose. Now the 6-corner structure which is formed in the solution which has been discussed in our book is the glucose. So that is glucopyranose ring. So glucopyranose structure so this is the basic dummy. Over here. So H, OH, H, OH and OH, H, OH, H, and this carbon also contains the hydrogen. So this is the structure of glucopyranose. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज के अंदर तीसरे कार्बन पे देयर वाज द इन्वर्जन ऑफ OH एंड H. यहाँ पर देखें ये यहाँ पर OH बाहर, रिंग से बाहर, 2 पर भी बाहर, 3 पे डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये इन्वर्स हुआ है, OH जो है वो अंदर वाले साइड पर मौजूद है. सो दीज आर द रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मोनोसैकेराइड्स विच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है, आगे चलकर हम ओलिगोसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसको भी डिस्कस करना, तो उसमें ये रिंग स्ट्रक्चर्स ही इस्तेमाल होंगे, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, द glucose is present in 2 forms: in free state. In free state, it is present in all fruits. तमाम fruits में है. Most abundantly in figs, figs कहा जाता है इंजीर को, and grapes, अंगूर, and dates.
खजूरें, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। एंड एज फार एज कंबाइंड फॉर्म or in combined state, the glucose is present. It is present in oligosaccharides and the polysaccharides, like the starch and glycogen and cellulose upon complete hydrolysis yield glucose. Clear? और स्टूडेंट्स एक और चीज, the concentration of glucose in human blood is 0.08%. That is an important MCQ. Clear? हमारे ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है ग्लूकोज की? 0.08%. And it is synthesized by the plants through photosynthesis. और ये आगे चलकर डिटेल्स पे आएंगे स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms C6H12O6 plus 6 oxygen and 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर देखें चूंकि सनलाइट इस्तेमाल हो रही है, सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, सो दैट इज द रिजल्ट, इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस के जरिए द 10 ग्राम ग्लूकोज requires 717.6 kilocalories of solar energy. मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के जरिए 10 ग्राम ग्लूकोज बनवाने के लिए सूरज की कितनी रोशनी इस्तेमाल होती है? 717.6 किलो कैलोरीज। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।